Hi guys, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes recording another video for you for the reading because these days we are highly focused upon the reading part. So we want people to perform really good in reading, and I have been getting constant comments or the queries on my YouTube channel for the reading part. So I'm just going to take this reading question forward. In the second paragraph, the writer suggests that one category of non-compliances means the people who are non-compliance उनकी कैटेगरी क्या है ऐसे कौन से लोग हैं जो नॉन कंप्लायंट हैं अगेन मेक योर क्वेश्चन वेरी इजी दैट who are the people who are non compliant, so I have to find that category of people who are non compliant. So compliant patients take their medications because they want to live as long as possible. Some simply do so because they are responsible conscientious individuals by nature. So यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नहीं है. So even if ये लाइन मेरे को समझ नहीं आती है पर ये तो compliant patients के लिए है. So this is not my answer. But the hustle and bustle of daily life and the employment often get in the way of taking medications, especially those that are timed inconveniently or in the infrequent doses, even for such well-intentioned patients. Again, यहाँ पे मेरा आंसर नहीं है. Well-intentioned patients मतलब जिनकी intentions अच्छी हैं. Intentions का मतलब नीयत. जिनकी नीयत अच्छी है वो कोई बात नहीं. For the elderly and the mentally or the physically impaired, US insurance companies will often pay for a daily visit by a nurse to ensure a patient gets at least one set of most vital pills. So this is the category I have found which are hard to manage. These are elderly people. These are mentally or physically disabled people. So these are the words I have found. And then, but other patients are left to fend themselves, and it is not uncommon these days for the patients to be taking a considerable number of vital pills daily. So this is what I have found as the answer: elderly, mentally or physically retarded. So that is the answer that I should look for, because उन्होंने one category पूछा है, that was the question. So I will just go to the question. So the question was, in the second paragraph, writer suggests that one category of non-compliance is elderly patients who are given occasional assistance. I'm not quite sure, but it can be. Patients who are overprescribed with a certain drug. No, there is nothing like that. So I can eliminate. Again, this is my weapon when it comes to reading. So this is my weapon. This is how I do my elimination method. So I am just gonna say no to this option of, so I'm using the elimination method cross. Busy working people who meant to be compliant. No. People who are by nature wary of taking pills. I don't think so. Anything. Elderly patients who are given occasional assistance. Let's see. I have to find it again. One category, elderly patients or the patients who are overprescribed. ये तो नहीं दिया था. Busy working people who meant to be compliant. This can be answered because there was one thing that was saying. So people who are by nature very का मतलब negative of taking pills. Let us read it again because this question can be done again in exam. Do only 2 times, otherwise leave the question for the second round. Compliant patients take their medications, but the hustle and bustle of daily life, so these are the busy patients, and employment often get in the way of taking medication, especially those that are timed inconveniently or the infrequent doses even for such. So elderly patients, so busy patients and infrequent doses means doses which are not timed well. So this was another thing. And then for the elderly patients, physically US companies will often pay a daily visit by a nurse to ensure at least one set of the most vital. But the other patients are left to fend for themselves. It is uncommon these days for the patients to be taking a considerable. So these are the things I'm unable to trace. Elderly patients who are given occasional assistance. Who are given occasional assistance means nurse assistance occasional दे रही थी, will often pay for a daily visit. But daily means daily visit. So A तो eliminate हो गया. A मुझे आंसर लग रहा था, पर A में उसने कहा है elderly patients जो will often pay for a daily visit. और जो हमें ऑप्शन में दिया है, जो मेरे को A ऑप्शन लग रहा था, उसका जो एलिमिनेशन हो रहा है वो इस ओकेजनल वर्ड के कारण हो रहा है. पेशेंट्स हु आर ओवर प्रिस्क्राइब्ड वर्ड बिल्कुल नहीं दिया. बिजी पीपल हु आर मेंट टू बी कंप्लायंट, तो ये मेरे को एक ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा था. तो बिजी पीपल जो कंप्लायंट हो सकते थे वो
और पीपल हु आर बाय नेचर वेरी ऑफ टेकिंग पिल्स, ये तो दिया ही नहीं हुआ। सो मेरा आंसर अगेन ए और सी में से एक होना चाहिए, पर सी लग रहा है, जबकि आंसर ए होना चाहिए था। सो आई हैव टू टेक योर हेल्प टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की रीडिंग का। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट इन गुड फ्लो, बट फिर भी आई हैव ट्राइड माई एलिमिनेशन मेथड। सो आप मुझे प्लीज हेल्प कर सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट किया है प्लीज। क्या आंसर दिया इसका, ए या सी? सी। है ना? सो अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए। देखो आपके सामने ही मैंने रीडिंग का क्वेश्चन किया, इवन मेरे को भी श्योरिटी नहीं थी। पर एलिमिनेशन मेथड ना इसीलिए बेस्ट मेथड है। आप प्लीज समझो इस मेथड को, आपको पेपर में यही अप्लाई करना है, यही आपको बचाएगा। दिस इज द मेथड दैट विल हेल्प यू। जैसे मैं आंसर ए करने वाला था, लेकिन ए आंसर ज्यादा स्ट्रोंग है सी के मुकाबले। ए आंसर सी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन जब मैं उस ऑप्शन को ध्यान से करता हूँ ना, तो मुझे ये समझ आता है कि ये ओकेजनल असिस्टेंट, और वहां पे दिया था डेली विजिट बाय अ नर्स। तो इस वर्ड ने क्लैश किया, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड आपकी हेल्प करता है कि आप ए की बजाय सी करो। सो दिस इज हाउ यू डू इट। कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग एंड से? यस सर। ओके, Yes, sir. कितने जनों ने ए किया था? किसी ने नहीं किया? फिर क्या किया था? सर मैंने यही किया था। हाँ, तो आपको मैम ध्यान रखना है कि ए में ये ओकेजनल वर्ड, आपको हर वर्ड मैच करना है। जब आप एलिमिनेशन में हर वर्ड मैचिंग करोगे, फिर गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दिस इज हाउ यू डू ओईटी रीडिंग। दिस इज व्हाट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, द बेस्ट मेथड। So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Thanks for watching the video. Please subscribe our channel if you have not.